So hi guys, a small update again. I think I thought I'll just let you know that I sold some quantity of silver last night and why I did it. What was the rationale? Again, there is nothing right, nothing wrong. The trade is going okay. I could have holded it, but I will tell you how I think, and you will get to know how what is my approach. Uh, while trading on a systematic yet discretionary manner. So basically, if you look at right now, what silver did last night was after the last update that we had, which was update one, is basically it went up, right, and it closed somewhere around 99. uh, it closed at 99,678, roughly 99,700. So I had 17 lots, and if you go right now, uh, let me just log in. One second. Uh, so I want to show you the trades. You know what I have done so that I walk the talk. So हुआ क्या है कि अगर हम एक्सचेंज ट्रेड हिस्ट्री में जाएं एंड यहाँ पे आप देखोगे मैंने कुछ क्वांटिटी 7 लॉट विच इज़ 35 एज अ क्वांटिटी आई बेसिकली सोल्ड. So roughly some 35 lakhs of exposure that I had, I kind of reduced, right, in silver. And if we, go back, and I want you to ignore, these bank nifty and nifty because I do a lot of things. I am testing an algo. Uh, uh, I'm basically forward testing it, and that this is an account where I'm back testing it. So you just ignore it for now. Uh, So yeah, I mean, right now what I have is basically 10 lots of November future of silver. I sold 7 lots last night, and I sold it around. If you go back and if we look at in the exchange trade history, I roughly sold it at late night around 10:30. Right, I was almost half asleep, and I couldn't hold my sleep after this, so I said I might as well square it, and I could have waited, but I said okay, I'll just sell it, and I'll share the rationale, right? So everything, but before that, right, I tell you there's nothing wrong with the trade on the 2 hour chart that we have discussed. Okay, again let me change it. This is, it has been going on well. uh, it moved further, the bricks got formed further, so there is nothing wrong. This is coming up now. The moving average is at 96,000. In case a red candle happens, it has to on a 2 hour basis close below 97, 800 ish, 97 600. Right, it has to close below this to make a red candle on Renko. So it is fine. I think the trend is intact. It is going up. But if the trend is intact, why did I sell? So what happened, if you can see this chart that we discussed yesterday, market was bouncing here and there, and then it came up, little volatile, came back, and then eventually started going up, and it went to the upper band of 1%. And that is where usually I get my, I get kind of ready that why. So I kind of keep alerts, and I then, it's not that you have to look at the markets always, but I was kind of alert कि यार यहाँ पे कुछ हो सकता है, right? And I start at these points look to sell off some quantity in case I want to buy. I can buy it again. Again, you don't have to do it. Uh, I kind of start, I kind of do it, right? But not too often, right? The idea to sell 7 8 quantity was the following, that this would finance my trade. And what do I mean by financing my trade? And that is the exact reason why I built, I'm basically uh, doing this course. So last night, if you remember, our risk per trade at this point of time was only uh, I think around 50,000 that was remaining. And uh, let me walk you through what happened, right? I think you know I have to change a few things, and we basically, where we discussed was that I can only, right, I mean,
आई पुश्ड माई स्टॉप लॉसेज अप, तो वो जो नीचे वाला स्टॉप लॉस था 8 क्वांटिटी का, उसको ऊपर पुश करके हम लोग 96,300 पे ले आए थे फ्रॉम 95,000, राइट. दैट इज हाउ इट वाज. एंड नाउ what happened is that, and so the our overall risk that was remaining in the system was around 50,000, right? So let me show you again that calculation. I think I keep on messing around. Yeah, so per lot risk, okay, I had 8 lots here. Let me do this. Number lots, I had 8 lots here, 9 lots here and 8 lots here, right? This is what my calculation was. And basically risk was this minus this into the number of lots into 5, and similarly over here so the overall risk that remained in the system was roughly 50,000, right? So लाख रुपए से 50,000 हो गया था. Now what I did is basically I sold some quantity of, right? And the reason I did it is because, if I look at my current scenario, I have 10 lots remaining, and so I booked roughly 7 lots at 99,557, right? So 95,600 ले ले, 500 ले लेते हैं for that matter. So when I sold 99,500 minus my 96,950, actually दोनों को यही कर देते हैं. So 2,600 पॉइंट्स का प्रॉफिट है जो मैंने पर लॉट लिया था इससे, इंटू 5 इंटू 10, तो लगभग मैंने 1,30,000 बुक कर दिया है, राइट. नाउ व्हाट वुड हैपन इज कि यार या तो मार्केट अभी मेरे फेवर में जाती रहेगी, ट्रेंड चलता रहेगा, या ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा. यही दो चीज़ें हो सकती हैं. अगर ट्रेंड ब्रेक होगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस है 96,300 वाला वो हिट होगा, राइट. तो अगर वो हिट होता है और 10 लॉट से हिट होता है तो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस था, सो लेट मी कम हेयर, राइट. T=2 पे बात करते हैं बिकॉज दैट इज रफली, ऑल राइट. इसको यहाँ पे लेके आए एंड लेट से 10 लॉट्स हैं 96,9 के नंबर, यहाँ 10 लॉट्स हैं. SL इज दिस मच, रिस्क पर ट्रेड इज दिस मच, प्रॉफिट ऑलरेडी मेड इज 1,30,000, राइट. नेट रिस्क नाउ this minus this, sorry, so the risk is this minus this. So whatever happens, अब मैं 1,00,000 रुपए बना के निकलूंगा. सिर्फ एक दिन के अंदर मैंने क्या किया है, अपनी पोजीशन को -1,00,000 से +1,00,000 ले गया. बिकॉज मार्केट वेंट इन फेवर, आई जम्प्ड अप एंड आई बेसिकली मेड श्योर अब मैं बैठ जाऊंगा. अब इतना आसान नहीं है मुझे बाहर निकालना. आई विल जस्ट सिट अराउंड. सो इसको कहते हैं मार्केट ने मेरा ट्रेड ही फाइनेंस कर दिया है, राइट. अब क्योंकि सिनेरियोज में कुछ भी हो, राइट, या तो मार्केट और ऊपर जाती रहे, विच लुक्स लाइक द केस राइट नाउ, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, 1,05,000 चली जाए, 1,000, 10,000, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा मैं बैठ सकता हूँ, राइट. आई हैव द कुशन टू ट्रेड. मेरे पास कुशन आ गया है, तो अब मैं वहां तक बैठूंगा जहां तक ट्रेंड चलेगा. हो सकता है 1,10,000 तक चले, मुझे क्या पता कहाँ तक चलने वाला है, राइट. तो मेरा क्या हो गया, मैंने एक कुशन बना लिया है. अब मैं उस कुशन के ऊपर आई विल ट्राई टू प्ले द मार्केट टिल द पॉइंट आई सी द ट्रेंड, राइट. आई हैव 10 लॉट्स, सफिशिएंट इनफ. 1,000 पॉइंट पे 50,000 बनेंगे, अगर 5,000 पॉइंट जाती है तो 2,50,000 बनेंगे, राइट. नाउ द गेम स्टार्ट्स. अब क्या है, मार्केट के पैसे से आई विल प्ले द गेम. अभी तक तो मैं मान के चल रहा हूँ बस ₹1,00,000 बना है.
जो सिस्टम में दिख रहा है वो मेरा पैसा नहीं है, राइट? लेकिन अब अगर ये ऊपर जाती है तो अब मेरा पैसा पैसा बनेगा एक्चुअली, राइट? दिस इज हाउ आई कॉल फिनेंसिंग द ट्रेड। जनरली आप मेरे को देखोगे मैं ये करता हुआ तरीके से फिनेंस करता रहूँगा, right? So in my mind right now what happened is we started, I will recap, we started with roughly 1 lakh rupees of risk per trade. कल जब मार्केट मूव करी, राइट, इन द मिडल ऑफ द डे वी काइंड ऑफ पुश्ड आवर स्टॉप लॉस अप, तो वहाँ पे सिर्फ 50,000 का रिस्क बचा। और फिर जब मार्केट और मूव करी थी, बाय द एंड ऑफ द मार्केट व्हेन इट वाज टचिंग, लेट्स से इट वाज टचिंग अराउंड 1% premium to the VWAP, I kind of shoved off 10 quantities, taking in, and ये सब मैं रफ कैलकुलेशन करता हूँ बिकॉज ऑन द फ्लाई होता है, तो मैं इतना आई नो कि भाई मोटा माटी मैं कितना कमा रहा हूँ और कितना जा रहा है, कितना रिस्क पे है। मुझे ये पता था कि ₹1,00,000 नेट आ जाएगा, एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ आई डिड इट। इवेंचुअली होगा क्या, जब आप बहुत बार करोगे तो ये काइंड ऑफ इट कम्स इन सबकॉन्शियस माइंड, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। नाउ आई थिंक द जॉब इज टू होल्ड द ट्रेड, राइट? अब आप ये भी कह सकते हो कि व्हाट अबाउट ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस? नाउ आई कैन पुश माई स्टॉप लॉस from 96,300 up as well eventually, right? I can push it to yesterday's low, right? Let me actually do that, but इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल ही नहीं जा रहा है इसके ऊपर तो, right? And I have room, why should I, right? And discrete यहाँ पे वॉल्यूम्स भी डिसेंट आई हैं, यहाँ पे भी वॉल्यूम डिसेंट थी। देर आर टू थिंग्स यू कैन डू। आई कैन पुश इट हेयर to 97,450, but silver is volatile. It can bounce back 2,000 points, and then I don't want to see me push, so I will trail slowly. मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि मैंने जहाँ लिया था 96,960 पे और लेट्स से 97,000 पे, मैं वहाँ पे स्टॉप लॉस 97,000 पे डिस्क्रिशनरी बेसिस पे यहाँ पे रख सकता हूँ कि भाई कुछ भी नहीं हो तो 97,000 नहीं आना चाहिए, एंड आई थिंक द बेस्ट आई कैन डू इज दैट। सो लेट्स से आई पुश दिस स्टॉप लॉस टू 97,000, आई विल मेक लाइक 1,30,000, वट एवर आई बुक्ड। बाकी सारा जो ट्रेड है, मैंने कहा कि मार्केट के जो पैसे बने हुए हैं वही बनेंगे, नहीं तो चले आएंगे। तो 7 लॉट से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, एंड दिस इज हाउ। सो लेट मी पुश माई स्टॉप लॉस, एक्चुअली आई क्रिएटेड एन अलर्ट, उसको रहने देते हैं, एंड आई विल पुश माई स्टॉप लॉस to 97,000, right? So this is the stop loss। SL2 अब है नहीं, एक ही stop loss है, right? Which is 97,000, right? So this is, and let me actually make it 97,000, and now we sit with the trend, we sit and we just sit, and market has financed our trade, so no need to hurry. We will keep watching and monitoring the trend. I don't recommend you to go to lower time frames, but lower time frames look equally good. No point to hurry. Let's see what silver does. It can give wild moves. Historically it has. So let's see. Cool. Thank you.